So this is the feedback to your presentations that you gave along with third assignment. First we had, let's talk about whatever I can see. Zoya, are you okay if I share right now? Okay. Zoya took 5 minutes and 24 seconds. Right, there were clear sighs when she was actually talking. तो बहुत clearly हमें सुनाई दे रहा था that she was a little nervous or maybe scared. तो अगर even if you are scared, don't let it be shown or heard. That can be practiced, right? Do not repeat words and phrases. When you do so, it sounds like as if you have learned it by heart. It's like a ratta rather than a speech. That spontaneity gets lost somewhere. The text size of the PowerPoint has to be increased. Okay, ajo band karo, aao. Right? But you did your best. You made the eye contact. You were very confident when you came here and you tried your best. One thing I would like you to improve in yourself, or could be eradicated in your behavior when you're moving a lot. Some of you, the first few of you, बहुत ज़्यादा आप इसमें मूव किए. शायद मैंने कभी बताया भी हो कि इतना सारा मूव ना भी करें, but then it's fine. It was probably your first time. Then you used a lot of good words. The vocabulary items used by Zoya were very nice. She used the word traits, characteristics, intriguing personality. When I'm done with somebody, I'm done. That was very nice. That was impactful. That was a speech that this is how I am and this is what I do. बाकी आपने देखा होगा कुछ बच्चे आके पढ़ रहे हैं. अभी किसी ने अपने आप को enthusiastic कहा लेकिन enthusiastic पढ़ना नहीं आया उन्हें. सो ऐसे मत करें ना. ये ज़रूरी है कि जो लिख कर लाएँ उसकी प्रोनाउंसिएशन देख कर लाएँ. Some of the pictures that you used were not yours. It is also part of copyright and वो सारा एक problem आ जाता है. When you're using somebody else's pictures, you need permission. एक public domain होती है और एक किसी की भी आप पिक्चर ले आए. आई एम नॉट श्योर आपने कहाँ से ली. पब्लिक डोमेन क्या होती है उससे समझें और पिक्चर्स वहीं से अटैच करें. बेहतरीन ये था कि पिक्चर्स अपनी अटैच की जाएंगे. इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एथिकल कंसिडरेशंस व्हाइल मेकिंग प्रेजेंटेशंस. अच्छा, साथ साथ मैं आपके पावर पॉइंट पे भी थोड़ा थोड़ा बोलूँगी सबके, सो दैट यू नो हाउ टू मेक एन इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बिकॉज इट्स वन ऑफ योर टॉपिक्स एज वेल. सम ऑफ यू मेड इट फाइन बट मोस्ट ऑफ इट, मेजॉरिटी का ये इशू था कि टेक्स्ट का साइज बहुत थोड़ा है और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है. इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है? व्हेन यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ मटेरियल ओवर हियर एंड वी आर बाउंड टू लुक एट व्हाट इज़ देयर एंड वी लूज द फोकस ऑफ द हियरिंग. हम सुनना बंद कर देते हैं और हमारी जो साइट है वो ओवरकम करती है. तो जितना मटेरियल कम करेंगे उतना अच्छा है. Then she said that I don't want to be under control of anybody but my parents. Now, under control could mean a number of things. You need to decide word choices carefully. All in all, I really enjoyed your presentation. You shared those, an unusual story with us in which you told us about the sobbing and everything. The words, they were good. Agar aapne sune to, all in all, your presentation was very good. You can clap for her. उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमदा की. हमदा took 4 minutes and 3 seconds, right? There were good transitions that you used. First of all, I'm going to talk about etc, etc, etc. Now I'm going forward to this. These are transitions. वो बहुत clearly उन्होंने अपने speech में use किए. Speech में transitions, they are absolutely necessary so that the audiences can actually follow you. That now what we are going to hear about. Maybe we are going to talk about, like if she has said like I'm going to talk about my family, my extended family and my immediate family. So मेरे लिए उसको follow करना, सुनना समझना बहुत आसान हो गया था. So this was a good point in your presentation. You had a very good audience hold. There was no murmuring at all. When a presenter comes and the audiences, they stay silent, that's a win-win situation. Presenter वहीं पर जीत चुका है, right? You do understand कि कोई सुन रहा है, at least कोई hurdle create नहीं कर रहा. You answered all the question. One of the best points of your presentation was कि जो सवाल मैंने आपको कहे थे कि आपने आंसर करने, आपने वो सब जवाब दिए. Good pronunciation. It did sounded like as if you have or you had practiced a lot. To such a point कि some of the lines were exactly what you were saying and written on the your PowerPoint. वो हमें नहीं पता चलना चाहिए. वो exact lines थी.
अगर आपने याद भी किया है, आप नहीं बता सकते, मुझे पता है आप लोग नहीं बता पाएंगे कि वो याद करके आएंगे। बेहतरीन तरीका है कि जो यहाँ लिखा हुआ है वो चेंज कर दें, याद करके आएँ। दैट इज़ ऑल्सो अ टेक्निक। हम सब याद नहीं कर सकते। इफ़ यू आस्क मी टू रिमेंबर समथिंग बाय हार्ट, इट्स वेरी अनलाइकली बिकॉज आई एम वेरी बैड एट इट। मुझे नहीं याद रहता। मैं एक दफ़ा भी आपको सेंटेंस बताऊंगी, नेक्स्ट टाइम कोई और बताऊंगी बात वही, लेकिन किसी और स्ट्रक्चर में, बिकॉज आई एम इन अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट। लेकिन टू एग्जीक्यूट एग्जैक्ट सेम वर्ड्स which you have practiced is also another level of talent which I believe is very rare. लेकिन वो शोकेस नहीं होना चाहिए। आपने ये नोट किया कि जो वो बोल रही हैं टेक्स्ट वही है, you did not, because ऑडियंस बड़ी हमारी साथ है। लेकिन जिस तरह की हमारी ऑडियंसेस जहाँ आपने जाना है वो नोट करेंगे, वो डेफिनेटली नोट करेंगे, ठीक है। Good English, no grammatical mistakes, so I really enjoyed, thoroughly enjoyed, and then you look nice, by the way, sounds really nice. And then there was an interference of hair, वो जब हम बार बार करते हैं तो वो notice होता है. Try not to do that. And baking. So the question that I've written over here, when am I getting something to eat? Of course, you're passionate about baking, so we should have a taste of it, नहीं? हमें भी पता चलना चाहिए कि क्या बना सकती हैं और हम भी टेस्ट करके बताएं. फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है I enjoyed it, and then there is a smile because I really liked the presentation. All in all, it was very good. ठीक है, फिर बात कर लेते हैं गुलाम सर्वर की. It was a surprise, Gulam. I was expecting you to be here only for 40 seconds, but you actually managed to break that stereotyping that I had in my mind that you won't be able to actually execute it. You did, so that's a good thing. जैसा भी किया आपने किया, वही पहला स्टेप है आगे जाने के लिए. इस तरह से भी स्टार्ट करें, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो it was fine. And I could tell by looking at his PowerPoint that ये उन्होंने खुद बनाई है, because there were some language issues and etc. उन्होंने किसी से unnecessarily extraordinarily उसको perfect बनवा के नहीं लिखा. उन्होंने जो जिस तरह वो लिखते हैं उस तरह लिखा. तो that is the first step to acceptance, और वो eventually it goes a long way, right? आपने मोस्टली ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट रीड किया, आपके जो हाथ थे वो आपके पॉकेट में थे और आप यूँ देख रहे थे. प्लीज़ लुक एट अस. द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ लुकिंग एट द ऑडियंसेस. यहाँ जो मटेरियल है वहाँ आप एक पॉइंट देख लें, आपने एक पॉइंट देखा और उसके बाद एक्सप्लेन करें, ठीक है. फिर एक पॉइंट देखिए, एक्सप्लेन करें. डोंट जस्ट रीड. स्क्रिप्ट रीड आपने बिल्कुल नहीं करनी. यू मूव्ड अ लॉट, लाइक सम ऑफ देम एज वेल. ज़्यादा हिल रहे थे. जैसे इनमें स्टेबिलिटी थी. अपना जो इनका नाम था हमदा में बहुत सारी थी कि वो यहाँ खड़ी थी, वो भी बहुत स्टेगनेंट थी, लेकिन वो यहाँ खड़ी नहीं थी, थोड़ा सा यूँ देखती थी, बात करती थी. दैट्स इनफ. इससे ज़्यादा हिलने डुलने की हमें ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आई ट्राई टू आस्क यू अ क्वेश्चन सो दैट आपकी टाइम लिमिट पूरी हो सके. बट देन आपने टैंगल की बात की, लेकिन जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाए, देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट. तब तक बोलें जब तक अगला आपको रोक ना दे. ये इंटरव्यूज़ में भी होता है. जब वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं माय नेम इज सादिया मुनीर, आई हैव डन दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस. दैट्स इट. नो, दैट इज़ योर विंडो टू इम्प्रेस अपॉन द नेक्स्ट पर्सन. सो इफ़ आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, यू मस्ट थिंक कि कोई वजह ही है कि मैम मेरी प्रेजेंटेशन में क्यों पूछ रही है. मैं चाह रही थी कि आपके 3 मिनट पूरे हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स स्टिल 2 minutes and 30 seconds, right? You tried your best and I'm happy. Although it was not perfect, but I am really happy with your progress. Okay, you can clap. फिर हैं जी हमारे पास, कहाँ है नाम का गया, मरियम ने इनका राइटअप बहुत अच्छा है, पढ़ने में मज़ा आया. ठीक है, आपने इस तरह से स्पीच ऐसे लिखते हैं जिसमें ये इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, राइट. उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑल इन ऑल वेरी गुड, बट द टेक्स्ट ऑन द पावर पॉइंट वॉज टू स्मॉल फॉर माई रीडिंग. मैं फ्रंट पे बैठी हूँ और मुझे इतना बड़ा चश्मा नहीं लगा हुआ, लेकिन आई वॉज अनएबल टू रीड. सो दैट्स अ वेरी बिग नो फॉर ऑफिशियल एंड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट्स जहाँ पर हमें टेक्स्ट नज़र ना आए. फिर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं. ठीक है, उस पर आपने काम करना है. एंड देन योर पेस व्हेन यू वर स्पीकिंग वाज अ लिटिल फास्ट, जो कि मेरे पास भी ये प्रॉब्लम है, मैं आपको बार बार बताती भी हूँ, लेकिन इट वॉज टू फास्ट. बट आई वॉज एबल टू फॉलो यू. मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, बट आई कैन गारंटी यू दैट सम ऑफ देम वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हर किस्म की ऑडियंस होती है, हर लेवल की ऑडियंस होती है, तो थोड़ा सा पेस को हम कम कर सकते हैं. देन देयर वर सम साइज दैट आई कुड हियर, अवॉइड देम. फिलर्स थे. फिलर्स होते हैं जब लैंग्वेज में हम करते हैं, वो हमें सुनाई नहीं देने चाहिए. आप सांस ज़रूर लें, लेकिन हमें पता ना चले. ठीक है.
इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जैसे मैंने आपको अभी बताया आपके पावर पॉइंट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, ऑल्दो आपने उसको स्क्रिप्ट रीड नहीं किया, लेकिन उसकी फिर ज़रूरत नहीं थी, आप वो पॉइंट लिख लेते कि माई इमीडिएट फैमिली, माई एक्सटेंडेड फैमिली, और उस पर बोलते, बिकॉज देयर वर नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड आई कैन टेल बाई listening to you that you know English, you can definitely speak in English perfectly, so you didn't have to write it all. PowerPoint का मतलब ये है कि आप बस pointers ले सकें, सारा लिखना ज़रूरी नहीं है. It was 50% a speech and 50% a presentation. There is a difference between a speech and a presentation. आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए कि speech is जैसे जो पहला प्रेजेंटर ज़रवा आई थी, that is more like a speech. ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या होगी कि आप इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन मरियम ने सारे क्वेश्चंस आंसर किए, वो इम्पोर्टेंट है. एंड देन व्हेन यू नो टॉक्ड अबाउट द गोस्ट स्टोरी, यू स्विच्ड इनटू उर्दू लैंग्वेज. आई वुड लाइक टू नो व्हाई, कि हम उर्दू लैंग्वेज में क्यों बोले. ठीक है, स्टोरी है, थोड़ी सी पर्सनल है, और हमें ऐसा लगता है कि हम उर्दू में, इफ़ वी आर गोइंग टू स्पीक इन उर्दू देन द ऑडियंसेस विल गेट इट, या कोई और वजह है. Okay, so the reason, now there are many reasons for which you can code switch. Code switch क्या होता है? Code is language, switch is into the other language. आपके लिए coding is different. Linguistics और language के लिए coding is और code switching is going into another language. उर्दू में जाने के reasons बहुत सारे होते हैं. For example, I have been told कि आप लोगों ने फीडबैक दिया है कि मैं मोस्टली इंग्लिश में बोलती हूँ, तो अब मैं, आपने देखा होगा कि मैं उर्दू में भी बात करने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके आई स्पीक इन Urdu as well. The reason probably Mariam started talking in Urdu so that you can catch it, and you did. आप लोगों के पास से response था, so that's fine, क्योंकि आप उर्दू को अच्छे से फॉलो कर पाए. इंग्लिश को आप उतना मेरा ख्याल से इस लेवल पे नहीं रखते कि आप मुझे समझना चाहें. समझा करें, कोई मसला नहीं. ऑल एंड ऑल यू टुक 6 minutes and 8 seconds. मैंने आपको रोका नहीं बिकॉज आई न्यू कि आप ख़त्म करने वाले हो. सो this was good, presentation was good, you can clap. फिर आए शाइमान आए और उन्होंने कहा एवरीवन माय नेम इज शाइमान, तो एकदम से SRK बन गए. तो आई वाज लाइक, अभी वो म्यूज़िक बजेगा, देखिए ये SRK करता है. SRK कौन है यार? वो शाहरुख खान जो है, उसका एक बड़ा ही आइकॉनिक किस्म का है. लेकिन व्हाट ही शेयर, सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रेजेंटेशन सुनने में मज़ा आया है वो शाइमान की ही है, बिकॉज ही वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस. जो है सो है, ऐसा ही है, राइट? ठीक है, वॉइस वॉज ओके, आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाया आपने ज़्यादा, विच वॉज शॉकिंग बिकॉज आई फाइंड यू टू बी कॉन्फिडेंट, बट आप नहीं बना पाए. आपने डिलिबरेटली नहीं बनाया या आप थोड़े से हेसिटेंट थे, मुझे समझ नहीं आई. आई होप नेक्स्ट टाइम यू विल मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस. You must improve your body language, right? Hands moving, ये वो, इसको कम करेंगे तो हम आप पे फोकस करेंगे, अदरवाइज फिर हम इस चीज़ों पे फोकस करते रहेंगे. इसलिए ज़रूरी है. ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स आर देयर, दे शुड नॉट बी देयर. देखिए आपके पास एक विंडो है 3-4 मिनट की, उसकी प्रैक्टिस करके आएँ सो दैट यू डू नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल और टेंसल मिस्टेक्स व्हाटसोएवर. Then you talked about that you were part of a gangster or something. That was a catchy point. आपने कहा कि मैं गैंग वॉर्स, स्ट्रीट फाइट्स में गया हूँ, तो गैंग वॉर्स इज़ अ वेरी intense word. You can't introduce yourself like that. Please don't do that in any artificial environment from now on. Even personal में भी मत करें, क्योंकि मेरे माइंड में तो गैंगस्टर होना is something very very problematic. ठीक है, स्ट्रीट फाइट्स में भी होना आप ये मत कहें. आप ये कह सकते थे कि I was a troublesome kind of a kid who would get into much fights around my vicinity. है, ऐसा ही था, होता है. मैं तो नहीं थी, बट मेरे आसपास ऐसे बच्चे हैं जो हर दूसरे दिन किसी न किसी पंगे में दे आर पार्ट ऑफ इट, एंड इट्स ऑल राइट, होता है. एंड देन यू टॉक्ड अबाउट दैट यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ वॉकिंग अलोन एट नाइट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड. बी सेफ प्लीज, द वर्ल्ड इज नॉट नाइस एनी मोर, राइट? एंड यू डिड नॉट लुक एट अस, वो मैं आपको बता चुकी हूँ. पावर पॉइंट पे मत देखें, हमारी तरफ देखें. इट वॉज नॉट अ स्पीच, बट ठीक है, फाइन. स्क्रिप्ट रीडिंग थी, लेकिन ऑल इन ऑल आई फाइंड इट फनी एंड अप्रोप्रिएट. ठीक है, आपने कोई ऐसी बात नहीं की जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये गैंगस्टर जैसे वर्ड्स मत यूज करें. दे आर नॉट अप्रोप्रिएट, वो आपके लिए ठीक नहीं है. यू आर नॉट दैट, वी नो दैट, राइट? सो ऑल इन ऑल यू टुक 2 minutes and 34 seconds. 3 मिनट पूरे नहीं हुए, तो थोड़ा सा आप और एक्सपैंड कर सकते थे. ओके, क्लैप फॉर शर्मा.
फिर हमारे पास आए जी, हम बात करते हैं हैदर की। हैदर अली नवाज, ही टुक एग्जैक्टली 3 minutes and 6 seconds। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सारी बात भी कर ली और टाइम भी मैनेज कर लिया। There was an eye contact and it was mostly made to me. He was looking at me. That is okay. I might have told you कि अगर कोई hesitancy हो तो पहले आप अपने इंस्ट्रक्टर को देख सकते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को और फिर इवेंचुअली हर किस्म की ऑडियंस को। Do not look at the PowerPoint, look at us, right? Your pronunciation, your clarity, stability in speaking was very much apt. बहुत अच्छी थी, बहुत clearly, बहुत तहम्मुल से आपने बताया जो भी आप बता रहे थे। तो इस तहम्मुल को कहते हैं stability, जिसमें हमारे पीछे कोई रेस नहीं है और हम clearly अपने point of views को we put them across. Then you talked about that you want to move outside Pakistan eventually. जब आपने उसकी बात की तो आपने बताया, आपने कॉज एंड इफेक्ट बताया, आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया कि आप यहाँ से एजुकेशन लेंगे तो देन यू विल बी एबल टू मूव टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंट्री। दैट वाज गुड। जब आप कोई बात कहते हैं, कोई क्लेम करते हैं कि कुछ करने वाले हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में आता है। सो दैट्स गुड दैट यू मेंशन दैट। Try to make eye contact with everyone, right? And you were very enthusiastic when you were talking about your favorite sports and Cristiano Ronaldo. That shows कि आप उस topic पे और भी बात कर सकते हैं. And then of course you use the transitions of language like Hamda very well. कि अब मैं ये बात करूँगा, अब मैं ये बात करूँगा. All in all, I liked your presentation, and you told us that you're very much close to your brother and you guys discuss the daily issues on daily basis. That is a good bond to share with the younger brother. And the text of the PowerPoint could be enlarged, वो size थोड़ा सा छोटा से बड़ा किया जा सकता है. बाकी all in all your presentation was good. फिर हम चलते हैं जी रमशा पे. रमशा ने लिए 2 minutes and 47 seconds. रमशा वॉज वेरी इमोशनल तो वर्ड नहीं है, सेंसिटिव भी नहीं है. व्हाट आई वांट टू से इज इमोटिव. इमोटिव इज वेर यू आर एक्सप्लेनिंग एंड सेइंग समथिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर हार्ट. सो इट वाज इमोटिव, नॉट इमोशनल बट इमोटिव. इमोटिव का मीनिंग आप खुद देख लीजिएगा. डोंट लुक एट द पावर पॉइंट, लुक एट अस. गुड इंग्लिश, गुड प्रोनाउंसिएशन. It was not a speech but more like a formal presentation, and you look formal. That's fine, that's also fine. Eye contact कम था, you can improve that. उसके अलावा the pauses, जब आप हर स्लाइड का वेट करते थे वो pauses अच्छे नहीं लग रहे थे. स्पीच जो होती है वो कंटिन्यूस होती है. जैसे आपके साथ जो बच्चा बैठा है उन्होंने देखा स्लाइड की तरफ भी, पढ़ा भी, लेकिन उन्होंने पॉजेज नहीं दिए, तो वो पॉजेज आपने नहीं देने. यू मेंशन दैट you talked about that in your one of your houses back home you have Jannat, and then you posted the picture of, there is a movie called Rings, उस चीज़ की picture थी, तो that was funny, मैंने note कर लिया. And you talked about that you read books. Can you tell us what kind of books? मैं mostly novels. उर्दू novels और English novels? English books. Both, ठीक है. All right, clap for. अब जब हम कहते हैं ना एज अ हॉबी कि मेरी हॉबी बुक रीडिंग है, तो उसमें बेहतरीन ये है कि टाइम लिमिट भी हमारी पूरी हो सकती थी. आप एक बुक के बारे में बात कर लेते दैट माई लेटेस्ट रीड वॉज दिस एंड इट हैड दिस काइंड ऑफ अ मोरल स्टोरी एंड आई रियली एंजॉयड इट एंड यू शुड रीड इट एज वेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उससे हमारे 3 मिनट पूरे हो सकते थे. फिर हमारे पास हैं जी Zirwa. Zirwa took 3 minutes and 47 seconds. It was a good presentation. She named her journey, her life. A subtitle was there. That was a good touch. The good PowerPoint, very aptly made. उन्होंने बहुत अच्छे किस्म के ट्रांजिशन वो सब यूज़ किया और मुझे टेक्स्ट नज़र भी आ रहा था. गुड वॉइस क्वालिटी. डू नॉट मूव मच, बस वही मूविंग का इशू है, बाकी इट वॉज फाइन. अच्छा ये मुझे बताएं कि लिटिल सिबलिंग्स होता है कि यंगर सिबलिंग्स होता है? यंगर. सो थोड़े से वर्ड चॉइसेस पे हम काम करेंगे. जैसे आप में से कोई ओल्डर कह रहा है अपने आप को, कोई अपने आप को एल्डेस्ट कह रहा है, प्लीज़ फाइंड आउट इसमें डिफरेंस क्या है. यू आर नॉट ओल्डेस्ट, यू आर एल्डेस्ट, सबसे बड़े. ओल्डेस्ट इज लाइक एंशियंट, बुढ़ापा एंड समथिंग. तो ये जो वर्ड चॉइसेस हैं इनको क्लियरली आपने यूज़ करना है.
and then you used Urdu somewhere to show feelings, that's fine. Interaction with the audience, and to my surprise, somebody in the audience responded to you, and that was Khalid, who never responds, नहीं देता. तो वहीं पे आप मेरे लिए एज अ गुड प्रेजेंटर फाइनलाइज हो जाती है. और मैंने यहाँ लिखा हुआ है ब्रावो. एंड देन शी मेंशन दैट शी हैज़ immersive nature, and then there were few of other adjectives as well. आपने ऐसे ही प्रेजेंटेशन लेके आनी थी. अब अपने लिए 3-4 वर्ड्स, जैसे एम्बी वर्ड कहा उन्होंने अपने आप को, इमर्सिव कहा, तो ये ट्रेट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं. यू कुड हैव यूज सच वर्ड्स. देन देयर वर सम फिलर्स. लैंग्वेज फिलर्स ये होते हैं जिसमें आप करते हैं उनको कम किया जा सकता है. और इसके अलावा ऑल एंड ऑल प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी थी, लेकिन जब एंटर की बारी आई तो आपने उसको इंटर बोला. ये याद रखिए कि इंटर इज डिफरेंट, एंटर इज डिफरेंट. एंटर इज एंट्री टू द रूम, इंटर इज इन बिटवीन. इसमें क्लियरली प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है. सो इट वॉज अ गुड प्रेजेंटेशन, और इनका राइटअप भी बहुत अच्छा है. सीरियसली मुझे सबमिट किया गया है. ठीक है, कुछ लोगों का मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह के, सो वी कैन क्लैप फॉर जरूर. Okay, then we had Sayyida Rabel Fatima. You took 5 minutes and 6 seconds. You started with a quote. The voice could be a little raised, but I was able to listen to you clearly. You had that stability like Heather. वो जो stability चाहिए एक presenter में वो आप में थी. वो good start, and do not look at the slides. The only problem that I had with your presentation was you were looking there. The rest, the information, the content, the enthusiasm that you showed about your goals and short-term goals and everything, that was on point. वो बहुत अच्छा था. ठीक है, उसके बाद then you mentioned that you worked for medium.com and Quora Digest. ठीक है, you still work for them. Free time work. So what do you do? एक तो she's a published article writer. You can have some tips from her. अगर आप अभी से कुछ पब्लिश करना शुरू करेंगे तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको चाहिए रिसर्च पब्लिश करने के लिए. और आपकी फील्ड में तो रिसर्च के बगैर यू कैन नॉट ब्रीथ. देयर इज़ नो अदर वे. तो स्टार्ट राइटिंग. अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल के होते तो मैं आपको क्रेडिटेड टास्क देती कि आपने पब्लिश करवाना है. मेरी यूजुअली जब बाकी क्लासेस हैं मैथ्स और फास्ट में, वो बच्चे पब्लिश करवा लेते हैं और उनके फुल मार्क्स आते हैं, वो कर लेते हैं. तो किया करें, कभी आपके पास टाइम हो एक छोटा सा ऐसे ही लिखें और उसे पब्लिश करवाएं. ओपिनियन लिखें, लेटर टू द एडिटर लिखें, कभी कुछ करें. दिस इज़ फन. उसके बाद शी मेंशन्ड दैट शी वांट्स टू डू अ PhD, एंड देन शी टॉक्ड अबाउट her philosophical approach towards life. Now that is something very unusual and very direct that you would like to pour your heart out in front of an audience. This is how you grab their attention. And then of course some pronunciation issues were there. For example, ability को आपने ability पढ़ा, तो वो थोड़ा सा आपको उस पर काम करना है. Eye contact could be improved, and you provided conclusion as well. So all in all, I really enjoyed your write-up and presentation. G claps. फिर हमारे पास थे जी हामिद आए हैं. हामिद ने हामिद जो थे थोड़े से नर्वस थे. ठीक है, look at us, don't look at there only, right? There was a shaking in the voice that I could identify. जब आपकी आवाज़ शेक कर रही है या वाइब हो रही है, there is a technique that you can employ. Slow down. सबसे पहले slow it down, take a deep breath and then speak. जब आपको ये परेशानी होगी कि हमने यहाँ से जाना है तो वो शेकीनेस और प्रोमिनेंट हो जाएगी. उसे कम करने का एक ही तरीका है that you slow down. ठीक है. You looked nice, by the way, very refreshing. It was not a speech but mostly slide reading. You had very great points to discuss, but the execution was not that good. For example, you talked about 9/11. I can assure you that most of them don't know what happened on 9/11. किसी ने उसामा बिन लादेन कहा, लेकिन इसके आगे इनको कुछ नहीं पता. तो अगर आपको पता था और आपको सारी स्टोरी, तो आप वो ऐड करते तो आपके टाइम में भी ऐड हो जाता. नहीं तो ऐसी चीज़ें जब आप लाएं तो यू कैन टॉक अबाउट देम इन फ्यू सेंटेंसेस, दैट्स फाइन. योर पावर पॉइंट इज़ गुड. इनका टेक्स्ट, कलर कॉम्बिनेशन सब ठीक था, सब नज़र आ रहा था. कोई
स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. आपने जो टाइम लिया वो 3 मिनट्स है, एग्जैक्ट 3 मिनट्स है, लेकिन यू कैन रिमूव और इम्प्रूव द हेसिटेशन और नर्वसनेस बाय प्रैक्टिसिंग. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये नर्वसनेस आपकी कम होगी. ठीक है, कॉन्फिडेंस पे काम करना है. बाकी पॉइंट आपके ठीक हैं. अच्छा, अब आप मुझे एक्सप्लेन करें कि आपने कहा आपने चाहत अली फतेह की फ़ोटो क्यों लगाई, उसका क्या मीनिंग था वो बताएं. अच्छा, सही है. मतलब देयर इज़ नो पन इंटेंडेड, यानी कोई बहुत गहरा मीनिंग अटैच नहीं है. इट्स जस्ट इन द फन वे. यूजुअली व्हेन यू डू दिस देयर इज़ अ पन इंटेंडेड. पन क्या होता है? डू यू नो PUN? व्हाट इज़ इट? When you're trying to direct our attention towards a certain or specified thing, that is a pun intended in English or language or otherwise. ठीक है, so that's all right. So we can clap for Hamid. And of course, we have one piece of information that he has been called Kaddu multiple times at home, so we can call him Kaddu sometimes. Nahin? Okay, Muhammad Bilal Hafiz. Bilal, you're from Khushab and you said it's not famous. It is absolutely famous for many things. Even I know, right? Yes, I have eaten it. It's very heavy, but it's nice. Your English is fine. Your material is fine, but you did not look at us, not even once. And आप आंखें बंद कर रहे थे. आप बहुत परेशान थे. आपके हैंड मूवमेंट से पता चल रहा था. बाकी आई वॉन्ट टू एम्फसाइज कि आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए, आपको ये पता है आपने क्या कहना है. इनका राइटअप भी बहुत अच्छा है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है. आपने ये करना है, आपने आई कांटेक्ट बनाना है. लुक एट मी. मुझसे तो डर नहीं लगता. लुक एट मी. द फर्स्ट थिंग कुड बी लुकिंग टू मी, लुकिंग एट मी, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द अदर पीपल. उससे आप आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे. दूसरी बात, यू केम लेट अगेन. ठीक है, hands in pockets, remove that. Anxious है, nervousness है, presentation को बहुत सारी improvement की ज़रूरत है. You speak well but you don't look at us, and then your PowerPoint was fine. तो आपको समझ आ ही गया कि what I'm trying to entail. आपने बाकियों की भी सुन ली है, तो थोड़ा सा उससे आपने बाहर आना है. बाकी ठीक है. All right, we can clap for Bilal. और बिलाल का टाइम भी पूरा नहीं हो पाया. इट वॉज 2 minutes and 41 seconds, बट दैट्स ऑल राइट. ठीक है, सो दीज वर द प्रेजेंटेशन. एंड मुझे आप लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चला. दैट विल हेल्प मी ऑफ कोर्स not analyze or judge you, but it will give me an understanding of your background. The more I know about you, the more tolerance I can build around you, right? It helps me at least, if not you. ठीक है, अब मैं आपकी नेक्स्ट